you'll not be flying every day. And my instructor like suddenly asked me where the runway is. They were like discriminating me or like being racist to me. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. और आज की वीडियो में मैं फ्लाइंग स्कूल की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी बताने जा रही हूँ। और मेरे साथ है पुचका और मोमो. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेज मोमो. ओके, लेट्स सी दिस वन. So let's start with our first expectation. I'll be flying all the time like a real pilot. No, that's not true. You'll not be flying every day. I thought जब मैं flying school join करूँगी तो I'll be flying आज कल every day, like how they do in like airlines. So I thought the same training worked like I'll be flying every day or it'll be fun. होता है fun, but you'll know later. But I thought that I'll be flying like every day. नहीं, ऐसा नहीं होता है. The main factor is weather. कभी कभी weather like mostly rainy seasons में weather इतना ख़राब हो जाता है like you literally don't get flying a single day. कभी कभी ऐसा हो जाता है, weather इतना ख़राब हो जाता है. It starts raining from like morning till night. इतना बारिश हो जाता है रेनी सीजन में. एयरप्लेन लाइक एयरक्राफ्ट उनका भी मेंटेनेंस होता है. आई गेस यू नो एयरक्राफ्ट तो ऐसा होता है कभी वेदर बहुत अच्छा होता है, कभी एयरक्राफ्ट भी होता है स्कूल में, पर इंस्ट्रक्टर नहीं होता है क्योंकि हमारा लाइक ऐसा होता है पर वीक लाइक स्लॉट्स देते हैं. इफ़ आई एम फ्लाइंग टुडे टुमारो माई फ्रेंड विल गेट लाइक ईच इंस्ट्रक्टर हैज़ लाइक अराउंड 5 to 7 स्टूडेंट्स. सो आज मैं फ्लाइंग करती हूँ, कल माई फ्रेंड विल फ्लाई, परसों माई फ्रेंड विल फ्लाई, लाइक अदर फ्रेंड विल फ्लाई, ऐसा चलता है. और मेरे दिन में अगर बैड वेदर है, फ्लाइट्स भी एयरक्राफ्ट भी सब मेंटेनेंस में, तो आई नॉट गेट फ्लाइंग. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन. आई विल स्मूथली पुल बैक ऑन द योक लाइक इन द मूवीज इन द फर्स्ट गो. नो, जो मीनिंग है इसका, आप टेक ऑफ में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप टेक ऑफ कर लोगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट गो में कभी टेक ऑफ नहीं होता है. जो मूवीज़ पे देखते हो आप, वो बहुत सिंप्लीफाइड है, लाइक बस वो योक पुल बैक करते हैं और टेक ऑफ हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है. यू आर डूइंग मैनी थिंग्स. यू आर मेंटेनिंग द हाइट, मॉनिटरिंग द पैरामीटर्स, यू आर टॉकिंग टू द ATC, यू आर डूइंग द चेकलिस्ट. वो बहुत चीज़ हो रहा होता है वहाँ पे. आप अपना पोजीशन, ये सब बहुत चीज़ हो रहा है उसमें. सो द नेक्स्ट expectation is I'll always know exactly where I am. This actually sounds, what do you say, this actually sounds very silly for like people who are not in our field. जब आप इनिशियल्स में होते हो तो you actually get lost. like जब मेरा इनिशियल फ्लाइट्स था उस टाइम मैं like एयर में थी, I was flying and my instructor like suddenly asked me where the runway is, and I was just confused. I started looking outside but I could not find the runway. like I knew what I was doing. मुझे मालूम था मुझे आगे जाना है, फिर I need to take left, I need to do that, I need to do this, but I forgot where the runway is. like I was doing like so many things that I forgot where the runway is. like that's so funny, you know, but होता है ऐसा. like when you're in air everything looks different. जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो यू नो वेयर यू आर, इवन द पैसेंजर नोज वेयर ही इज़. लेकिन फ्लाइंग में ऐसा नहीं होता है. आप ऊपर पहुंच जाते हो और आप गुम हो जाते हो. इफ़ यू डोंट नो द प्रोसीजर्स, यू डोंट नो नॉलेज अबाउट नेविगेशन, यू गेट लॉस्ट इन द एयर. सो होता है ये इनिशियल्स में. सो बिफोर आई बिगिन माई नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन, लेट्स हैव समथिंग. ओके, लेट्स हैव
puchka. Where do I keep this? By the way, this is potato ball. So let's move on to next expectation. I will be looking cool in a uniform walking through the airport with sunglasses. Like I'm literally covered in sweat. जब मैं flying जा रही हूँ, जब मैं flying से आ रही हूँ, I'm covered in sweat. That's the only thing that comes in my mind. ऊपर से यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, it's almost like 40 degrees Celsius. And उसमें you have to wear the uniform. I wish like trainees like us could wear just a t-shirt and like a track pant, but we cannot. We have to wear our uniform. और ऊपर से we are like, I can imagine myself carrying that big bag full of gear, like headset, my documents, aircraft documents, वो सब पे कैरी करके मैं ऑफिस से जाके लाइक ऑफिस में एंट्री करके मैं वहाँ से भाग कर लाइक लिटरली भाग कर जाना पड़ता है. इंस्ट्रक्टर्स आर लाइक एवरी फ्लाइंग स्कूल में वो इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको पैनिक कराता है. लाइक देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्टर, बट वहाँ से एक दो होता है जो आपको इतना पैनिक करते हैं. एंड दे आर वो ऐसा होता है कि द मोमेंट दे सी यू विद द बैग दे आर लाइक रन फास्ट रन टू द aircraft. इतना पैनिक कराता है. Like then I have to like run, and they are, or the moment I'm running towards the aircraft, they are like, hey, first run to the जो फ्यूल भराने जगह होता है वहाँ जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो फ्लाइंग नहीं मिलेगा, जल्दी करो. दे आर फ्यू इंस्ट्रक्टर हु आर लाइक दैट, नॉट एवरीवन इज लाइक दैट ऑब्वियसली. तो ऐसा होता है. और लाइक मॉर्निंग जब आप ड्रेस्ड अप होते हो उस टाइम यू लुक गुड टिल देन. और जब आपका कॉल्स आता है, आपको जाना पड़ता है एयरक्राफ्ट में, तो यू आर जस्ट रनिंग. आई नो दे आर लाइक कूल लाइक स्टूडेंट्स, बट आई डोंट लाइक, आई गेस मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट. दे आर स्वेटी, लाइक इतना ऊपर से गर्मी होता है लाइक एयरक्राफ्ट के अंदर. वी आर लाइक, आई कैन सी लाइक जब मैं लाइक एयरक्राफ्ट के पास दौड़ते जाती हूँ तो आई कैन सी लाइक मेनी अदर स्टूडेंट्स रनिंग टू, देन आई फील बिट रिलैक्स्ड. Because like initially I thought it was just me, like since like पूरे like school में I was the only one from like our place, so I thought like they were like discriminating me or like being racist to me. Like I just thought like like something wrong was happening, because I never imagined my flying school to be this different. Like I was running to the aircraft, I was sweaty, I was like carrying. और sometimes it happens like आप जाते हो आप एयरक्राफ्ट में और you sit down and you cool yourself, you relax and sit, और suddenly I forget something. और फिर मुझे एयरक्राफ्ट से निकल कर like I have to like सब रीसे करना पड़ता है. I have to go back to the office, bring all the documents back. कभी कभी मैं कुछ भूल जाती हूँ. I don't know, I have that tendency, I forget things when I'm in rush. So I have to go back again, bring back again. It's never like that. You don't look cool in your uniform.
You do look cool like in the morning, but दिन ढलते जाता है और ऐसे ही यूनिफॉर्म में कूल दिखना भी ढलते जाता है, एंड आई डोंट लुक कूल लाइक. ओके, so let's have something. Let's have momo. It's so good. Even though it's veg, like I have this very bad habit. After every bite, I tend to drink water. I know it's not good. By the way, I made this momo, I made this puchka, I made this puchka ka pani, I made this balls, and how is this ball? Like it took around, I don't know, 15 minutes to make all this. So let's move to another expectation. Where was I? Okay. My instructor would praise my landings all the time. Like, why would your instructor even praise you all the time? Like, every landing is different. Today you might be landing well, but not every day. You cannot land perfectly every day. Or the thing could be like, you might never be getting challenges, and that's not good. If you get challenges, then you'll improve more. So landings are not same all the time. So another expectation is sunny sky equals to perfect flying condition. Do you think it's correct? Like, just think about it. Sunny sky equals to perfect flying condition. What do you think about it? Is it true or false? It's false, because okay, so today it's not raining, sky is clear, it's sunny day, but it might not be the best day. There might be winds, like strong winds, cross winds. So that's not good for your flying. Like, it's good in a way, like you learn like more, but in terms of like condition, it's not good. My last momo. Okay, so let's move on to the last expectation that I have. I will sound so professional while talking to ATC.
Like when I think of ATC, like I have more moments with ATC than with my instructors. Once, like मेरे initial stage पे headsets on and I started like talking to the ATC. Actually, the ATC was talking to like some other aircraft. I didn't know, like I was not supposed to talk to the ATC when the ATC is speaking to someone else, like especially when they're landing or taking off. Like I should not disturb them. I didn't know that. Then the ATC actually scolded me. It was like silent for a moment. Okay. Then I asked my instructor, like I told her like why was I like scolded by the ATC? Okay, so she told me like when they are landing or when they are taking off. Like I didn't know they were landing or taking off. Okay, like that was my initial stage. You know, their like languages, like our language is like different than like the usual language. So I didn't know they were taking off or landing. So I just called them again and again. Okay, so I have one more story. तो फ्लाई करते वक्त like you're supposed to tell your position every now and then. All my stories are like initial वक्त का, like later like when you learn everything like उतना आपको स्टोरी आपका स्टोरीज नहीं होता है like but initial stages का स्टोरीज बहुत होता है that which is like really funny. तो I was like flying. Suddenly my instructor like looked at me and she was like, do you know someone is like calling your name again and again? Like they don't call me by my name but जो एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट का नंबर होता है उससे बोलते हैं. तो आई फॉरगॉट लाइक आई वाज बीइंग कॉल्ड. तो देन आई रियलाइज्ड लाइक आई वाज डूइंग मैनी स्टफ देयर. आई वाज डूइंग दिस दैट एंड दैट. तो आई फॉरगॉट अबाउट इट. आई वाज डूइंग माई चेकलिस्ट. एक्चुअली वो चेकलिस्ट थोड़ा लंबा था तो आई वाज लाइक इतना में ध्यान मेरा वो चेकलिस्ट में चला गया कि आई फॉरगॉट लाइक ATC में मुझे बुला रहा है. तो व्हेन शी सेड तो मुझे लाइक रियलाइज़ हुआ कि ATC मुझे बुला रहा है. ओके सो यू नो वन टाइम व्हाट हैपेंड. लाइक दिस इज़ रियली लाइक वेरी सिली. Like all the stories are actually silly. Like if you are a pilot there, then you must be like thinking, I don't know what. But like एक बार ऐसा हुआ like इतना हरी में थी like एयरक्राफ्ट में जाने के लिए so that इंजन वगैरह सब स्टार्ट कर लूँ so that like मेरा वो फ्लाइट कैंसिल ना हो. तो I was like rushing to the aircraft. I refueled the aircraft. I checked everything, the tires, the engines, like every part of it. Okay, so I did everything. Like later, like there was another instructor. He came and I was like, he's not my instructor. Like, why is he even coming here? So he kept his bag and even he was looking at me like in the same way I was looking at him. Like, क्या चल रहा है ये. तो आई रियलाइज्ड मैं किसी और की एयरक्राफ्ट में बैठ रही हूँ. लाइक आई डिड एवरीथिंग एंड आई वाज सिटिंग इन समवन एल्सेस लाइक एयरक्राफ्ट. लाइक Z और J में आई गॉट कन्फ्यूज. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग लाइक कोई और इंस्ट्रक्टर क्यों. आई थॉट लाइक आई वाज हैविंग सम टेस्ट और समथिंग. ही जस्ट केम एंड ही केप्ट हिज बैग एंड ही स्टार्टेड लाइक गोइंग अराउंड द एयरक्राफ्ट. एंड देन आई जस्ट लाइक सडनली मुझे लाइक स्ट्राइक हुआ कि ओ गॉड डिड आई से लाइक किसी और की एक पेट तो नहीं लिया. एंड देन आई लुक्ड एट द नंबर एंड आई वाज एक्चुअली लाइक सिटिंग लाइक किसी और की एयरक्राफ्ट. तो आई टोल्ड द इंस्ट्रक्टर आई एम रियली सॉरी. आई थॉट दिस वाज माई एयरक्राफ्ट एंड आई जस्ट लेफ्ट द एयरक्राफ्ट एंड आई वाज लाइक सो एम्बैरेस्ड. दैट वाज रियली फनी. ओके सो एट वन पॉइंट मेरे दिमाग पे एक लाइक इतना फनी लाइक उस टाइम में लाइक एयरक्राफ्ट में कभी गई नहीं थी. लाइक मेरा बस डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हो रहा था. तो आई जस्ट थॉट ओ माय गॉड ये एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा कैसे खुलता है. तो लाइक आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दैट लाइक एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा कैसे खुलता है. लाइक आई डोंट नो दैट क्वेश्चन वाज लाइक सो फनी. लाइक लेटर लाइक when I went like close to the like aircraft, then I realized that was really simple. Like it was just like a normal like door lock. So that's it for today, guys. Do like, share and subscribe, and if you haven't watched my previous video, do check it out. And what should be my next video, a vlog or a mukbang,
Comment down below and bye bye.